Yes. Picture.
उपात्त दुरिदक्षय द्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते श्री महाविष्णु वराग्नेय प्रवर्त मानस्य अद्यः ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अस्मिन् देवालय सकलदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्तिश्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टाय शुभतिथौ श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य पुलिस्य वन्दे गोत्र फैमिली मेंबर्स नेम बच्चा मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्य शुभफल अवाप्यर्थं तैः कर्मभिः सूचित आगामी भावित वर्तमान वर्तिष्यमान सकल दुष्ट अरिष्ट ग्रह प्रतिबंधक दोष निवारणार्थं चिंतित मनोरथ प्राप्त्यर्थं अखंड अष्टैश्वर्य प्रसाद सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्रसाद सिद्ध्यर्थं अस्मिन् दिने संभवित द्रव्यैः संभवित पदार्थैः कल्पोक्त प्रकारेण अनन्तलक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता आचरिष्ये आदौ निर्विघ्नेन महागणपति पूजा करिष्ये टर्मरिक गणेश again take it Dolores. Om Ganana Gणपतिं वराहे कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे श्री महागणपति सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतम् आवाहयामि आसनं समर्पयामि take it one flower, dip it on the water. श्री महागणपतये पादयोः आद्यं समर्पयामि वाटर and turmeric. श्री महागणपतये हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि
శ్రీ మహాగణపతయే ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణపతయే శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి నెక్స్ట్ ఎల్లో రైస్ శ్రీ మహాగణపతయే వస్త్ర యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి శ్రీ మహాగణపతయే గంధార్థే హరిద్ర కుంకుమ చూర్ణాని సమర్పయామి టర్మరిక్ పౌడర్ కుంకుమ అక్షతై పుష్పాణం పూజయామి. టేక్ వన్ ఫ్లవర్ పెటల్స్ 16 నేమ్స్ ఇన్ గణపతి మహాగణపతి. ఓం సుముఖాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం పాలచంద్రాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సిద్ధిమహాగణపతయే నమః ఓం సిద్ధిమహాగణపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి ఓం నమస్కారం. దశాంగం గుల్గులం దోభం సుగంధం సుమనోగరం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూమాగ్రాపయామి సాధ్యం త్రివృత్తి సంయుక్తం వన్నినాయోగిజం మయా ప్రధానమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాకటం మహాగణపతే నమః ధూపదీపం సమర్పయామి నైవేద్యస్థానే. You have two banana, take one banana, put it in front of the Ganesha, the Ganesha. Just sprinkle in the banana water. ఓం భోర్భువస్వః మహాగణపతయే యథాభాగ అవసరార్థం కదలీఫల నివేదయామి 5 times. ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం అపానాయ స్వాహా, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా, ఓం ప్రధానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా. మహాగణపతే నమః. కదలీఫలం సమర్పయామి. మహాగణపతయే తాంబూలార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. నమస్కారం. హారతి. ఓం నమో ప్రాణపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తే అస్తలంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివరుదాయ శ్రీవరమోహరే నమో నమః. జై బోలో గణేశ భగవాన్ కి జై. ఫ్లవర్ పటల్స్ అండ్ డెలోరైస్. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దందే ప్రచోదయాత్. శ్రీ మహాగణపతయే పాదారవిందయో వేదోక్త దివ్యసువర్ణ మంత్రపుష్ప అంజలి సమర్పయామి.
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా దేవతా ప్రసాదం శిరసా గృహామి. అక్షత గణేష అక్షత పట్టుకోవాలి. శిరసా గృహామి శతమానం భవతి శతాయ పురుషసేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. Satyanarayana. First you invited the Navagraha. Okay, you will take Dolores. Om Suryarte Samprapte Surya Puja Antakarye Surya Dhyanam Pravakshami Atmapedo Upashantaye Asatyan Savartamana Vesena Samartya Hiranyena Vidada Theda Devoya Dhoda Vipassine Agnim Dhodam Pranemehe Hodaram Vistavedasam Aste Ektasya Durkadam Ekhavede Padapade Pathoda Dispada Nipadat Jipada Nishkedam Yagyam Bhagamed Rayaspa Raidamanasanto. Please after me. Surya Graham రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్య అంబరధరం రక్తఛత్ర ధ్వజ పతాకాది శోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరు ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం మండప మధ్యే అధిదేవత సమేతం సూర్యగ్రహం ఆవాహయామి. Surya. Middle one is the Surya. Again take Dolores. Next is Chandra. Chandrarashtra Samprapti Chandra Puja Antakare Chandra Dhyanam Pravakshami Manapedopashantaye Omapyada Swamede Sudastava Vrityam Bhavavadisangate Bhavasvaha. Chandragraham Shvetavarnam Shvetagandham Shvetapushpam Shvetamalya Ambaradharam Shvetachhatra Bhaja Ratha Patakadi Shobhitam Divyarata Samarudham Merum Pradakshini Kurvanam Suryagrahasya Agne Dikbhage Adhidevata Sametam Chandragraham Avahayami. Dolores in Chandra. First line is the right side top of the corner is Chandra. Next is the Puja. Angaraka is same. Take Dolores. Pujarate Samprapte Puja Puja Antakarye Puja Dhyanam Pravakshami Rogapedopashantaye Om Agnir Murtha Devakakapade Prithvivyayam Apagam Redagam Siddhimpade Bhavasvaha. Angarakagraham Raktavarnam Raktagandham Raktapushpam Raktamalya Ambaradharam Raktachhatra Dhvaja Ratha Patakadi Shobhitam Divyaratha Samarudham Merum Pradakshini Kurvanam Suryagrahasya Dakshina Dikbhage Sametam Angarakagraham Avahayami. Angaraka. Next is the Buddha. Om Buddharate Samprapte Buddha Puja Antakarye Buddha Dhyanam Pravakshami Buddhipedopashantaye Om Buddhyaspagya Pujakrametta Bhote Vedhamahitya Managandvagyasta Vijaragyanam Vadakam Setuyatim Om Bhavasvaha. Is after me Buddhagraham Pitavarnam Pitagandham Pitapushpam Pitamalya Ambaradharam Pitachhatra Bhaja Ratha Patakadi Shobhitam Divyaratha Samarudham Merum Pradakshini Kurvanam Suryagrahasya Ishanya Dikbhage Adhidevata Sametam Buddhagraham Avahayami. Buddha. First line, left side, the top of the corner is Buddha. This is the Guru. Guru is Brihaspati.
गुरुवरिष्ठे सम्प्राप्ते गुरुपूजा अंतकारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीडोपशान्तये त्वं बृहस्पते त्रियोरात्मद्विभादिकृतपद्यनेषु यद्येते तमसर्तप्रयात् तस्मात् द्रविणन्तेहि चित्रम् बृहस्पति ग्रहं कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकमाल्य अंबरधरं कनकच्छत्र ध्वज पताकादि शोभितं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणं सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे अधिदेवता समेतं बृहस्पतिग्रहं आवाहयामि गुरु। नेक्स्ट इज शुक्र शुक्रार्थे संप्राप्ते शुक्रपूजा अंतकारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्नीपीडोपशान्तये प्रवशुक्राय भानवे भरतं हव्यमदिजाके सुबोधं यो देव्या निमाषा जनोगस्कन्दर्शस्वानि विद्मनाजिकादि शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्य अंबरधरं श्वेतच्छत्र ध्वज पताकादि शोभितं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणं सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे अधिदेवता समेतं शुक्रग्रहं आवाहयामि शुक्र। शनैश्चर शन्यरिष्टे सम्प्राप्ते शनिपूजा अंतकारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीडोपशान्तये सन्नो देवीर्विष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तुनः शनैश्चरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्य अंबरधरं नीलच्छत्र ध्वज पताकादि शोभितं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणं सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे अधिदेवता समेतं शनैश्चरग्रहं आवाहयामि नेक्स्ट इज राहु राहुवरिष्ठे सम्प्राप्ते राहुपूजा अंतकारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुपीडोपशान्तये ॐ कयानश्चित्रा भवतोदि सदा वृतस्सखा कयासचेष्टया वृता राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रमाल्य अंबरधरं धूम्रच्छत्र ध्वज पताकादि शोभितं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणं सूर्यग्रहस्य नैऋत्यदिग्भागे अधिदेवता समेतं राहुग्रहं आवाहयामि राहु। केतु केतुवरिष्ठे सम्प्राप्ते केतुपूजा अंतकारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तये ॐ केतुं दृण्वन्न केतुवेषोपर्याभ्यसने केतुगणं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्य अंबरधरं चित्रच्छत्र ध्वज पताकादि शोभितं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वाणं सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिग्भागे अधिदेवता समेत केतुगणं आवाहयामि केतु। नेक्स्ट इज अष्टदिक्पालक इंद्र अग्नि यम निरुति वरुण वायु केतु वायु ईशान कुबेर ईशान इज अष्टदिक्पालक क्लॉकवाइज। इंद्रं वावस्तु प्रियवामेदनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः मंडपस्य प्राग्भागे इंद्रं दिक्पालकं
ఆవాహయామి. ఇప్పుడు ఎలోరైస్ ఇంద్ర. త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేళావయాశిష్టాః యజిష్టో వందితమస్తోషామావిష్టాద్వేషాగ్నిప్రమధ్యస్మదే. మండపస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే అగ్నిం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. యమాయ సోమకం సుమత యమాయ జుగుతాహి యమకుంభ యజ్ఞో గచ్చత్తిదో దోరణంకః. మండపస్య దక్షిణ దిగ్భాగే యమం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. యమ. ఆనో నియద్యస్తదరేగ్రం విష్ణామాదయస్వ యోయం పాదస్వస్తి విసదానః. ఉద్భవస్వ మండపస్య నిరుడుతి దిగ్భాగే నిరుడుతిం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. నిరుడుతి. మమ్మే వర్ణస్సు దేహమత్యాదిమలయా కామవస్త్రాజగే దత్తాయామి బ్రహ్మణాత్మనాస్తాశాస్తేజమానో హరిభిః. మండపస్య పశ్చిమ దిగ్భాగే వరుణం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. వరుణ. నెక్స్ట్ వాయు. మండపస్య వాయువ్య దిగ్భాగే వాయువ్యం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. వాయు. అయకం సోమ ప్రదేతవ మనస్తనోషిప్రదాని దేవి శుభగాసుపత్ని. భోద్భవస్వ మండపస్య ఉత్తర దిగ్భాగే కుబేరం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. కుబేర. ఈశాన. సమీశానందగస్పతిం ధ్రియంజనోపాసే హోయం పోషాణాయ ధార్గవాయుభ్యస్వస్తయే. మండపస్య ఈశాన్య దిగ్భాగే ఈశానం దిక్పాలకం ఆవాహయామి. ఈశాన. నెక్స్ట్ ఇది పంచలోకపాలక. మిడిల్ ఎల్లో యంత్రం. మిడిల్ వన్ ఇస్ ది గణేష, బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర అండ్ దుర్గా. ఓకే. ఓం గణానాన్తా గణపతిం నమామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం. మహాగణపతిం లోకపాలకం ఆవాహయామి. గణపతి. మిడిల్ వన్ ఇస్ ది గణపతి. బ్రహ్మాదేవానాం పదవేకవేణాం విప్రాణాం మహిళామృగాణాం శ్రేణో గృధ్రానాగస్పతిర్వరానాగం సోమపవిత్రమత్యేంద్రేభణే. బ్రహ్మాణం లోకపాలకం ఆవాహయామి. బ్రహ్మ. మహావిష్ణు. ఇదం విదక్రమే త్రేధానృదేవతం సమూఢమస్తవాగం సురే. మహావిష్ణుం లోకపాలకం ఆవాహయామి. మహావిష్ణు. ఓం గద్రుద్రాయ ప్రదేదసే మేఢమాయ దవ్యసే యోగదేవసంతపం హృదే. రుద్రం లోకపాలకం ఆవాహయామి. రుద్ర. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్. దుర్గాం లోకపాలకీం ఆవాహయామి. దుర్గా. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. మహాలక్ష్మీ ఆవాహయామి. మహాలక్ష్మి. అదైతం విష్ణవే జరుర్నిర్తపదే యజ్ఞో వై విష్ణుః యజ్ఞ ఏవాం తదప్రతిష్ఠతే స్తోత్రజోదే విష్ణవే స్వాహ విష్ణాయై స్వాహ ప్రతిష్ఠాయై స్వాహేతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. అస్మిన్ చిత్రపటే సాంగ సపరివార సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం ఆవాహయామి. సత్యనారాయణ.
ఎవరిబడి నమస్కారం. కలశ ఆవాహన నక్షత్రం. ఓం మమ్మే వర్ణస్పృదేహ మధ్యాదుడయా కామవస్త్రాదిగే తత్వాయామి బ్రహ్మణాంతమానసాస్తేజమానో అగర్భిః అహేణ పావనావృతేకభవద్రుతుం సమానాయ ప్రమోషే అస్మిన్ కుంభే సకలతీర్థాధిపతిం వరుణం ధ్యాయామి వరుణమావాహయామి వరుణస్యైదమాసనం. अस्मिन्ने ओम तद्विष्णो परमं पदं कृता पश्यन्ति सूर्यः दिवेम चक्षुरादिदं तद्विप्रासामि पण्यवो जाग्रवागं तस्तमिन्दते विष्णोर्यः परमं पदम् ओम महादेव्येति विद्महे विष्णुपत्नीति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. अस्मिन् कुम्भे श्री सत्यनारायण स्वामिनं ध्यायामि महालक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आदयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि. स्नानं समर्पयामि. ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विशतो कृत्वा अत्यधिकं पुरुष एवेदकं सर्वं तद्भूतं यत् भव्यं उदावृतस्तस्ते सानः उदन्नेनाजरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽद्धबुधैः पुरुषः पादोऽस्तेह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानसने अभि तस्माद्भिराडजायत विराजो अधिपूरुषः जातो अत्यरिच्यत मस्ताभ्योमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वद सन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयज्ञस्तरद्धभिः सप्तास्यासन्पतिधयः सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तन्यज्ञं बर्हिर्यप्तौक्षण्ये पुरुषं जातमक्रतः तेन देवाय जन्त स्वाध्यार्षयस्तये तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः अमृतं पृषदाद्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यास्तये तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः ऋजस्सामानुजज्ञिरे छन्दागुंसुजज्ञिरे तस्माद् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्ताजायन्त एकेतो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माद् तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं यददो कल्पयन् किमस्य कौ बाहो तावो रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुनारण्यः कृतः पूर्वोदस्तः यद्वैस्यः तद्याकुंसोऽद्यो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं ज्येष्ठाद्यो समवर्तत अभ्यां भोगर्तिसस्तोत्राद् तथा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा
त्वाभिवदन यदास्ते धाता परस्ताद्यमुदाधार शक्रप्रविद्वान् प्रतिदस्यदस्त्रः तमेवं विद्वानपतयः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानुच्यन्ते तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय जय भोलो नारायण भगवान की भजन्स भजन्स श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 जय बोलो नारायण भगवान की जय। श्री प्राणप्रतिष्ठा महामंत्रस्याम रामकृष्णाभ्यां नमः ओम ह्रीं दिनीभ्यां नमः रोमध्यमाभ्यां नमः ओम रघुनाथाभ्यां नमः ओम कृष्णाभ्यां नमः ओम रामकृष्णाभ्यां नमः ओम रामभद्राय नमः ओम ह्रीं तुलसीस्वाहा ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने स्वामिने आवाहयामि सत्यनारायण आसनं समर्पयामि सत्यनारायण सत्यनारायण नमस्कार
आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने पादयोः पाद्यं समर्पयामि dip it on the water, just sprinkle water. Satyanarayana and Navagraha. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि one more time sprinkle water. आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने वस्त्र विघ्नोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने गन्धार्थे हरिद्र कुंकुम चूर्णानि समर्पयामि अक्षतै पुष्पाणि पूजयामि we have books. Satyanarayana Ashtotam. Okay, chanting together. Okay. But you list Akshata and Pravarpatas, but Satyanarayana and Ashtotam chanting together. ओम सत्यदेवाय नमः slowly ओम सत्याय नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्ययज्ञनाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यकार्याय नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यप्रयणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यशुद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यजन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्याधीशाय नमः ओम सत्यक्रदवे नमः ओम सत्यकलाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवासवे नमः ओम सत्यमेघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः
ॐ सत्यामृताय नमः ॐ सत्यवेदाङ्गाय नमः ॐ सत्यसतुर्मात्मने नमः ॐ सत्यभोक्त्रे नमः ॐ सत्यसुतये नमः ॐ सत्यार्जुजाय नमः ॐ सत्येन्द्राय नमः ॐ सत्यसङ्ग्रहाय नमः ॐ सत्यस्वर्गाय नमः ॐ सत्यनियमाय नमः ॐ सत्यमेधाय नमः ॐ सत्यवेद्याय नमः ॐ सत्यपीयूषाय नमः ॐ सत्यमायाय नमः ॐ सत्यमोहाय नमः ॐ सत्यसुरानन्दाय नमः ॐ सत्यसागराय नमः ॐ सत्यतपसे नमः ॐ सत्यसिंहाय नमः ॐ सत्यमृगाय नमः ॐ सत्यलोकपालकाय नमः ॐ सत्यसिद्धाय नमः ॐ सत्यदिक्पालकाय नमः ॐ सत्यधनुर्धराय नमः ॐ सत्याम्बुजाय नमः ॐ सत्यवाक्याय नमः ॐ सत्यगुरवे नमः ॐ सत्यन्यासाय नमः ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॐ सत्यसंप्रदाय नमः ॐ सत्यसंप्रदाय नमः ॐ सत्यभक्ताय नमः ॐ सत्यवायवे नमः ॐ सत्यशिक्षकाय नमः ॐ सत्यानन्दाय नमः ॐ सत्यधीरजाय नमः ॐ सत्यगुह्याय नमः ॐ सत्योदराय नमः ॐ सत्यहृदाय नमः ॐ सत्यकमलाय नमः ॐ सत्यानलाय नमः ॐ सत्यहस्ताय नमः ॐ सत्यबाहवे नमः ॐ सत्यमुखाय नमः ॐ सत्यजिह्वाय नमः ॐ सत्यदंष्ट्राय नमः ॐ सत्यनासिकाय नमः ॐ सत्यश्रोत्राय नमः ॐ सत्यचक्षुषे नमः ॐ सत्यशिरसे नमः ॐ सत्यमुकुटाय नमः ॐ सत्याम्बराय नमः ॐ सत्यप्राणाय नमः ॐ सत्याच्युताय नमः ॐ सत्यश्रीवल्लभाय नमः ॐ सत्यगुप्ताय नमः ॐ सत्यपुष्कराय नमः ॐ सत्यतृतीयाय नमः ॐ सत्यपदामृताय नमः ॐ सत्यग्रहरूपिणे नमः ॐ सत्यप्राणायुधाय नमः ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमः नानाविधपरिबलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महालक्ष्मी स्तोत्रम नेक्स्ट पेज कंटिन्यू टू ॐ बड़े बड़े महालक्ष्मी ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः ॐ पद्मायै नमः ॐ सुजये नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ सदायै नमः ॐ सुदायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मय्यै नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ नित्यपुष्टायै नमः ॐ विभावर्यै नमः ॐ अदित्यै नमः ॐ दित्यै नमः ॐ देवतायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ वसुधारण्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ क्षीरोदसम्भवायै नमः ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ॐ बुद्धये नमः ॐ नखायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐ अशोकायै नमः ॐ अमृतायै नमः ॐ
ॐ दीप्तायै नमः ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ॐ धर्मनिलयायै नमः ॐ करुणायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ पद्माक्षै नमः ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्मोद्भवायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ पद्ममालाधरायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ पद्मन्यै नमः ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ॐ पुण्यगन्धायै नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्द्रायै नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवशङ्कर्यै नमः ॐ शक्त्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करण्यै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ विमलनिलयायै नमः ॐ परारोहायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ वसुन्धरायै नमः ॐ उदाराङ्गायै नमः ॐ हरण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्यै नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ श्रेणसौम्यायै नमः ॐ शुभप्रदायै नमः ॐ निपवेस्तकदानन्दायै नमः ॐ वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ समुद्रजनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ विष्णुभक्तस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्षै नमः ॐ नारायणसमास्तायै नमः ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ सर्वोभद्रववारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ इन्द्राय ॐ सूर्याय नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ मङ्गारकाय नमः ॐ बुधाय नमः बृहस्पतये नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ शनीश्चराय नमः ॐ राघवे नमः ॐ केतवे नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ पत्न्ये नमः ॐ यमाय नमः ॐ ददये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायवे नमः ॐ सोमाय नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ ईशान्ये नमः ॐ महागणपते नमः ब्रह्मणे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ उद्गायै नमो नमः ॐ अनन्तलक्ष्मी समेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामी देवतायै नमो नमः ॐ नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि। नमस्कारम्। ॐ धोर्वं धोर्वतञ्जोस्तान् धोर्वृष्टं धोर्वयं वयं धोर्वामस्तं देवानामधे ॐ आग्रापयामि उद्देत्यस्तजातवेद भग्नन्निर्मम रोगस्तमक्षमावहदेवनन्ददिशोदिशा सत्यक्षदीपन्दर्शयामि धूपदीपान् ब्रह्माचमनीयं समर्पयामि। बनाना सत्यनारायण स्प्रिंकल वाटर भवस्वः स्वतंत्रादित्येन परिशिष्यामि
आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित अनंतलक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता भागम अवसरार्थम कदलीफलं निवेदयामि सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने तांबूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि नमस्कारम पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्वमोदात्रोत्तममहत्तमधर्मस्याप्ये सर्वस्वस्ते सर्वमेव जयते। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने आधारविन्दयो दिव्यसुवर्ण मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। 5 members, they are doing the stories. Stand. Stand to go. Om Sri Gurubhyo Namaha. Sri Satyanarayana Katha, Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Puja, the narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Sutta replied, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring about salvation, Narada travelled to Vishnuloka. There he found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can get rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in his life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressing Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that I just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, flowers, ghee, milk, yogurt, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment to one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, this puja brings contentment. सत्यनारायण भगवान के
Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I tell you who all observed the Satyanarayana Puja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he wandered about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor man, unable to bear the pains of hunger. I beg for alms. Sir, if you know the way out of this misery, please tell me." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of the old man, replied, "O Brahmin, the Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and remove their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefit." Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and discipline. The poor Brahmin immediately resolved the puja. After his sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only one thing, namely of the poor. Then he got lots of money, which he brought fruits, milk, yogurt, and honey, and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Narayana's bliss, he shared his poverty and lived a contented life. Every month, on a full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada. The rishis then addressed Maharishi Sutta, "O great one, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Sutta continued. One day when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes the Vrata will get all riches. Marriage has been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear it. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went away. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata, whatever he was going to make by selling the firewood that day. He went to the part of the city where rich people lived, sold the firewood and made twice as long as profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought banana, sugar, milk, ghee, yogurt, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. Satyanarayana Bhagavan ki. Chapter 3, Maharishi Sutta continued. O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Puornima. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife is a pure and pious woman. One day, the royal couple were performing the Satyanarayana Puja on the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped by his boat, got off, and addressed the king humbly.
"O king, would you tell me what you're doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy and told his wife Leelavati that they should perform Satyanarayana Puja, which would fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then, by divine grace, Sadhu's wife conceived, and in due course, a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of the promise to perform the puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the loot near Sadhu and escaped. Finding the king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested him and brought him before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also had their merchandise confiscated. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Vrata in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth, and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselor about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter was frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your faith, but there's nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts, and bade them goodbye. Satyanarayana Bhagavanukhe. Chapter 4. Sadhu and son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things?"
We do not have any valuables in the boat except vessels. Thereupon Lord Narayana replied, O Sadhu, so be it. The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law, who spoke, This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask his forgiveness. The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives, informing them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Narayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappeared. Let her go home, take the prasad and return. On hearing this, Kalavati rushed home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Sadhu then returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Satyanarayana Bhagavanu ki. Chapter 5. Chapter 5. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day, after hunting, he was resting under the shady tree. Some cowherds were happily performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached the palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, portrayed himself before Satyanarayana and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharishi Sutta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, the observance of the Vrata can lead to fulfillment of one's wishes. This ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunaka and the other rishis returned to their respective abodes. Satyanarayana Bhagavanu ki.
water. आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित अनंतलक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने यथाभागं अवसरार्थं बद्धुकान् निवेदयामि। ओम ताम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि। Everybody namaskaram. Om Samrajam Javarajam Javaslev Jajana Gృhe Lakshmira Atratyama Jatayama Avanam Drajamase Sankata Parivara Satyanarayana Swami Devataji Namo Namananda Karpura Mangala Sundara Divyanirajanam Samarpayami Raksha Rakshan Dharayami Namaskaromi Jai Bolo Satyanarayana Bhagavanu Ki Everybody take the loris in flower petals. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Pujavan Pushpavan Bhavate Chandrabhavam Pushpam Pushpavan Pujavan Pushpavan Bhavate Evam Veda Yopamayatanam Veda Ayatanavan Bhavate Agnirbhavayatanam Ayatanavan Bhavate Yogverayatanam Veda Ayatanavan Bhavate Abhova Agverayatanam आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योगायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वेदपर्णपामायतनम् आयतनवान् भवति योमिश्रपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वामश्रपदायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योत्सवां प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव प्रतिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामान् कामकामाय वैनो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्परान्नमः अन्तस्तरति भूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वृषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपोज्योतिर्षामृतं ब्रह्मभोद्भवस्सु वरो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
आदित्यादि आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित अनंतलक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता आधारविंदयो वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्रपुष्प अंजलिं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण। Next is the Harati. Jai Jai, you have books, right? Jai Jagadish Harati. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jagadish Hare, Pavanam Ke Santa Kuda Sajano Ke Santa Janame Durare. Om Jai Jagadish Hare, Jai Bhagavate Dukha Vinase Swami Dukha Vinase Sukha Sampati Garvane Sukha Sampati Garvane Kanta Vide Kanta Om Jai Jagadish Hare. Vidhatu Mere Sarana Gauni Swami Sarana Gauni Om Jai Jagadish Hare. Paramatma tum antaryami Swami tum antaryami Parabrahma Parameshwara Parabrahma Parameshwara tum sabhuke Swami. Om Jai Jagadish Hare. तुम पालन करना स्वामी तुम पालन करना मैं मूढ़ मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भक्ता। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति मिलो दयामि मिलो कृपामि तुमको मैं पुकारि। ओम जय जगदीश हरे। तुम रक्ष
Everybody take it along. आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्मादि पंचपालक सहित अनंतलक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता एतत्फलं सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. वाटर in अक्षता put it Satyanarayana. Put it on Satyanarayana. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्व सत्येश्वर जनार्दन सर्वापराधां क्षमा. Again take it Dolores. सांग सपरिवार सत्यनारायण स्वामिने यथास्थानं प्रवेशयामि. Just little bit move the Satyanarayana picture. यथास्थानं प्रवेशयामि. Yeah, Satyanarayana. Yellow rice and flower petals. Put it in your head. Satamanam bhavati sata vipratasreendriye pratishthati. Two bananas and laddu prasadam. Take it. Everybody, align. Namaskar.